Good morning, all of you. Welcome to the channel, and I hope that you all must be doing great. So, in this video, we'll be analyzing all the important topics and their important details for 2nd of June 2023. So, firstly, we are having that a judicial panel is going to probe the Manipur violence as per the Union Home Minister. So we had a look at this thing yesterday also. It's a repeat. And jo commission hogi, that would be headed by a retired High Court Chief Justice. CBI will also be like it will be also involved in this investigation, and he warns the Kuki militant groups of stern action if 2008 agreement is violated. So हमारे लिए यहाँ पे क्या important हो जाता है 2008 में क्या agreement sign किया गया था. इसके अलावा जो मैं 100 times repeat कर चुकी हूँ कि ethnic composition क्या reason है behind the violence, वो सारी चीजें लोगों की डिमांड क्या है वो हम ऑलरेडी डिटेल में एनालाइज एंड डिस्कस कर चुके हैं. ऑल राइट, तो यहाँ पे इससे रिगार्डिंग इनडायरेक्टली देयर वाज वन क्वेश्चन इन प्रीलिम्स आल्सो दिस ईयर कि अगर किसी स्टेट में देयर इज इंटरनल डिस्टर्बेंस गोइंग ऑन, तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन क्या सेंटर की कुछ ड्यूटी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं. So that was indirectly hinting towards the situation in Manipur, or we can say that question was there because of whatever is going on in the state of Manipur. So Amit Shah says that I want to appeal to those who have the weapons to surrender them immediately. Police will start combing operation from tomorrow, and they should come forward and surrender the weapons to the police. All right. So, हमारे लिए like you can find out about 2008 agreement which was signed back in 2008. So, उसके क्या important provisions हैं and if it is being violated or not. So GST collections, they have crossed rupees 1.5 lakh crores for the fifth time. So this is for the fifth consecutive time, and they have increased by 11.5% in May. So इसका आप ट्रेंड अगर समझोगे तो वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा. अगर आप सर्च करोगे you will get the graphs. So you just need to have a look at the trend of past 1 year as per the months, and even yearly basis maybe you need to have a look because GST was launched in 2017 and now we are in 2023. So yearly trend pata hona bhi would be helpful. So wrestlers ka jo protest hai usse regarding now farmer leaders, they are going to carry forward the wrestlers protest against the WFI chief, and they'll be meeting the president also. So we'll be getting daily updates about that. So in FIR, wrestlers, they narrate traumatic experiences of sexual harassment by the WFI chief. So he pulled my daughter forcefully, later threatened to ruin her career, says the father of a minor victim. And another wrestler says in the FIR that she informed Prime Minister about the harassment and she was assured of help. But still, if we have a look at actually the ground situation, you know how the things are. So state set for start of 21-day celebrations of 10th year of Telangana's formation. So last state जो बनाया गया इंडिया में, that was the state of Telangana. इसके अलावा proper मतलब chronology हमें पता होना important है जब हम बात करते हैं state formation and मतलब first state that was formed on linguistic basis. So वो सारी चीजें important हो जाती है जो constitutional provisions हैं मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ थिंक वेंट फॉरवर्ड, वो सारी जर्नी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है.
तो जब हम बात करते हैं डिफरेंट फोक डांसेस की, कथकली फ्रॉम विच स्टेट, और भी जो बाकी सारे डांस फॉर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए दैट दे ओरिजिनेट फ्रॉम विच स्टेट, उनके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या उनको मतलब क्या वो मतलब डिफरेंट डांस फॉर्म से हाउ दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम देम, वो थोड़े बेसिक चीजें हमें पता होना इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, सो इसको आप सर्च करोगे, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज रिलेटेड हैं रिलेटेड टू डिफरेंट फोक डांसेस, इवन दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। कमिंग टू द एडिटोरियल, सो एट द रूट ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज, सो कल ही हमने डेटा देखा था रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया, एंड वी सॉ कि देयर हैज बीन अ स्लो डाउन इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। सो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेसिफिकली जब हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं, उस एरिया में भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंस वी आर फेसिंग अ स्लो डाउन इन दिस एरिया। तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए, जो पहले स्टेप्स लिए गए वो इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, क्या चैलेंजेस हमें फेस करने को मिल रहे हैं, सो ये सारी चीजें हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। So the issue of manufacturing या services as the desirable path for India's economy makes the rounds in public fora periodically. ये चीजें हमें मतलब periodically सुनने को मिलती है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दोनों मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अर्ली पार्ट ऑफ द सेंचुरी की बात करें, जब इंडिया वाज अ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स दे वर बूमिंग इन इंडिया, it had been asked कि why India's services sector should not leapfrog over the manufacturing to propel the economy forward. तो ये लीप फ्रॉगिंग वाली जो चीज है, मतलब एग्रीकल्चर में वी हैड ऑल द डेवलपमेंट इनिशियली, मतलब जो प्रॉपर प्रोसेस है, पहले एग्रीकल्चरल में डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चरल एरियाज अलाइड एक्टिविटीज में, उसके बाद पीपल शिफ्ट टू इंडस्ट्रियल एरियाज, मैन्युफैक्चरिंग एंड देन टू सर्विसेज। बट इंडिया के केस में क्या हुआ, वी लीप फ्रॉग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड डायरेक्टली जो हमने सर्विसेज सेक्टर में जो ग्रोथ देखी दैट वाज लाइक अमेजिंग। So this proposal challenged the standard model of economic development for in most successful economies. मतलब बाकी सारी economies में भी ये step wise manner में ये चीजें हुई है, but India के केस में it was different here कि we leapfrogged the manufacturing sector. तो इसकी वजह से एक अलग सिचुएशन डेवलप होगी, एक न्यू चैलेंजेस हमारे लिए डेवलप होगी जिनके साथ हमें डील करना पड़ा एंड डील कर भी रहे हैं। So frustration of the Indian economic policy maker can be well understood because सिचुएशन इज डिफरेंट। मतलब किसी और कंट्री की केस स्टडी से नहीं समझ सकते कि उन्होंने क्या स्टेप लिए जब वो इंडिया लाइक सिचुएशन में थे, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन इज यूनिक इन दिस केस। सो हम 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो दे हैड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, बट जो सिग्निफिकेंट स्केलिंग डाउन था ऑफ टैरिफ्स एंड डिसमैंटलिंग ऑफ द लाइसेंस परमिट राज थिंग that did not lead to an increase in the share of manufacturing in the economy. मतलब 1991 रिफॉर्म्स वाले टाइम पीरियड में भी हमारा मेन फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आए, बट जो रिफॉर्म्स लेके यहाँ पे दो मेंशन है कि टैरिफ्स बहुत ज्यादा हमने रिड्यूस कर दिए और जो लाइसेंस परमिट राज वाला सिस्टम था दैट वाज अबॉलिश्ड, बट उसकी वजह से इतना हमें ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखाई दिया। सो ऑफ कोर्स इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इट ऑट नॉट टू बी सीन ओनली इन टर्म्स ऑफ उसका क्या साइज है, और भी बहुत सारे एरियाज है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिनको समझना इंपॉर्टेंट है। सो देयर हैज बीन क्वालिटेटिव चेंज आफ्टर 1991। अगर हम क्वांटिटी मतलब क्वांटिटेटिव चेंज की बात करते तो इतना मैसिव चेंज नहीं हुआ, बट जब हम क्वालिटेटिव चेंज की बात करते हैं स्पेसिफिकली द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो वहां पे हमने काफी चेंज, काफी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस देखने को मिली है। सो रेंज एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इंडिया में दैट हैव अंडरगॉन एन इम्प्रेसिव इंक्रीज। सो राइजिंग क्वालिटी is one achievement and variety of goods that are being produced without the expansion of manufacturing in relation to the economy suggest rising inequality of the income। मतलब क्वांटिटेटिवली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना एक्सपेंशन नहीं देखने को मिला, बट क्वालिटेटिव देखने को मिला है, तो ये हमें पॉइंट कर रहा है कि देयर इज राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि अगर नंबर्स भी इंक्रीज होते ना तो वी कुड हैव सेन कि इनइक्वालिटी नहीं इंक्रीज हो रही है, बट इस सिचुएशन में दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस दैट इज इमर्जिंग आउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। एंड यहाँ से हमें एक चैलेंज ये भी देखने को मिला कि क्वांटिटेटिवली इतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ, क्वालिटेटिवली जो ग्रोथ देखी, जो हम
quality of the products that are being manufactured in India वो इतनी impressive है. So that is one achievement. All right. अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं चीजों को. अनइम्प्रेसिव रिकॉर्ड की जब बात करते हैं तो आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो नेक्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग केम इनटू द गवर्नमेंट्स व्यू वाज आफ्टर 2014, जब हमने मेक इन इंडिया की बातें करनी स्टार्ट करी. दिस थिंग वाज लॉन्च्ड कि हमने फोकस किया कि हम इंडिजिनसली वी विल बी फोकसिंग अपॉन मैन्युफैक्चरिंग एंड मेकिंग थिंग्स इन इंडिया. तो after 1991, उसके बाद से post 2014, we again focusing upon the manufacturing sector in India. More recently, there has been the production-linked incentive scheme. Even this is on similar lines, which essentially subsidizes production of certain products. So we know how this PLI scheme works. Though it was announced with fanfare, but first within the first months of the Modi government assuming office, record of these schemes has not been that impressive. मतलब जितनी जो हमारी expectations थी regarding these two things, वो इतनी ज़्यादा impressive नहीं रही है. But first advance estimates of the national income for 2022-23, it is showing कि manufacturing growth is around 1.3% for the year. It is like very, very low. And all the data, which is like, while the data unambiguously it points to the role of the demonetization of 2016 in the slowing of manufacturing sector, persistence of the low rates of growth in the presence of policy initiatives that were focused on manufacturing point to something structural holding back the sector in India. तो दो चीजें यहाँ पे importantly बोली गई है कि एक तो रीजन अगर हम समझे कि वाई ओनली 1.3% ऑफ द ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके पीछे क्या रीजंस है. तो एक रीजन तो डीमोनेटाइजेशन है जो 2016 में किया गया. उसकी वजह से डेफिनेटली जो अनऑर्गेनाइज्ड एरियाज हैं, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं, उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ. उसके अलावा जीएसटी का डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ. तो ये दो रीजंस हम बोल सकते हैं. एंड उसके अलावा मतलब कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल एक चीज है या दो तीन चीजें हैं हम बोल सकते हैं, मतलब वो स्ट्रक्चरल इन नेचर है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होल्ड बैक कर रहा है. मतलब हमें उस चीज को पकड़ने की, उस चीज को सॉल्व करने की, एड्रेस करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू सी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसा हम चाहते हैं उस तरीके से वो ग्रो हो. So issue reportedly it came up for the discussion at private event where it was agreed कि जो economy है it needs manufacturing push for creation of jobs. हम jobless growth की बात करते हैं, that is a challenge. तो manufacturing sector एक ऐसा area है जहाँ पे there is potential to create more jobs and उसकी वजह से we can increase our growth rate further. So potential is immense when we talk about the manufacturing sector. So we are told that during the ceremony, Finance Minister addressed the corporate leaders and she said that I am sure the Indian private sector is ready. So she asked them, are you or are you not? So even on the earlier occasions, minister, she has like publicly referred to the many policy initiatives favoring the corporate sector. Like initiatives, हम ये नहीं बोल सकते कि policy lack कर रही है या scheme wise we are not coming up with schemes which will be helping the manufacturing sector in further expansion. ये सब चीजें नहीं बोल सकते हैं. जैसे कि अभी यहाँ पे mention किया गया कि कुछ structural है which is holding back the manufacturing sector. So prices of food की अगर हम बात करें तो despite the favorable measures जो लिए गए by the government, it would be simplistic to expect industry leaders to achieve a manufacturing push on their own. So there is demand to be reckoned with, and this is largely independent of the supply side also, which the government has acted upon. Household demand for the manufacturers inevitably follows the satisfaction of its demand for the necessities of life, like for the basic necessities like food, housing, health, and education, none of which can be postponed. So for a substantial section of India's households, food occupies a large share. So this constricts the growth of demand for the manufacturers as well. मतलब फिर ज़्यादा food वाले sector में concentrate करते हैं. So एक ये restriction हो जाता है. Then relationship between per capita income and the share of food in the household expenditure is also strongly negative globally, with the richest countries like US and Singapore having low shares
when we talk about the per capita income and the share of food in the household expenditure. So there is negative relation specifically in the richest countries. So of the large economies of the world, the share of food is the largest in India, and GDP per capita is the lowest in India. So ये opposite है. So industry leaders, they have no control over the demand side of the equation. Definitely, जो industry leaders हैं, उनका supply side वाले पे control है, demand side equation पे they can't control things. However, the possibility of exporting means that the manufacturing sector of an economy can sidestep a narrow domestic market. After all, the smaller countries of East Asia would never have been able to grow their manufacturing base to such an impressive level had they relied on the domestic markets alone. तो डेफिनेटली जब हम बात करते हैं कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया की, तो एक्सपोर्टिंग जो मतलब हम ग्लोबल डिमांड की बात करें तो डेफिनेटली ग्लोबल डिमांड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन एक्सपेंशन ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. So in comparison with the economies of East Asia, we can see what is necessary for an economy to be a successful exporter. So successful exporter होने के लिए क्या क्या steps important हैं, क्या चीजें required हैं, ये हमें पता चल सकती है with the performance and with the journey of the East Asian economies. So one area is infrastructure and दूसरा है skill level of the workforce. So these determine the cost of production कितनी रहने वाली है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स अपॉन द स्किल लेवल ऑफ द लेबर फोर्स. सो एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इज लाइक लार्जली बाय द सी. जो ट्रेड होता है दैट इज लार्जली वाया सी. सो चैलेंज ऑफ रीचिंग द सी पोर्ट्स फेस्ड बाय कंपनीज लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया, that can be imagined because again India is a peninsular country. So we like North India में जो companies located है, having access to ports is a challenge to them. So goods have to first reach the coast. पहले by road से they will be traveling, transporting the goods to the port, and then exporters, they must deal with the relatively poor infrastructure and practices in the Indian ports. So infrastructure की अगर हम बात करें तो ports पे हमें develop करना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. सो पहले आप रोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करोगे, वहां पे इतनी ज्यादा कॉस्ट आपको पड़ जाती है. उसके बाद जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है द पोर्ट्स, उसके साथ आपको डील करना पड़ेगा. सो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज जो इंडिया फेस करता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टर्स, दैट कैन बी सीन इन मच हाई टर्न अराउंड टाइम ऑल्सो. सो ये एक्सपोर्ट्स जो पोर्ट्स के थ्रू सी के थ्रू होते हैं, वहां पे एक टर्म यूज की जाती है टर्न अराउंड टाइम. तो इवन दैट इज ऑल्सो हायर, मतलब जितना कम टर्न अराउंड टाइम होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है, बट इंडिया में इट इज वेरी हायर. एंड इसको हम अगर कंपेयर करें विद दैट ऑफ सिंगापुर, तो दैट इज वेरी हायर इन केस ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है केरला ट्रेडर्स का कि दे आर फोर्स टू यूज बोट्स विच आर आउटसाइड द स्टेट एज दे कॉस्ट मच लेस टू यूज. सो ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा फैक्टर है इंडिया के केस में, एंड इट इज नॉट एवरीथिंग येट. और भी बाकी चैलेंजेस हैं, एंड इनएक्सपेंसिव पावर, स्पेस, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं. Educational outcomes in India. So, but it is with respect to education that India has fallen most behind the countries that are the manufacturing successes of the world. So, ranking of countries by the Program for International Student Assessment reveals this thing directly. So, in a group of about 75 countries, the countries of East Asia are at the very top, while India barely manages to be not to be the last. सो इंडिया के केस में इवन एजुकेशनल सेक्टर में हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है विद द ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सो ईस्ट एशिया में जो बाकी सारी इकोनॉमीज है दे आर ऑन द टॉप जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, बट इंडिया में हम ये मैनेज करते हैं कि कहीं हम लास्ट ना आ जाए. मतलब लास्ट नहीं आना चाहिए, ये यही पॉइंट कर रहा है कि वी सिचुएशन इज नॉट दैट गुड, या इट इज नॉट so developed in India जितनी होनी चाहिए. So now, if we do not wish to rely on the test administered by international bodies, we may turn to our own very NGOs जो different indexes release करते हैं, reports release करते हैं, and one of them is Pratham, which assesses learning outcomes in India school. So it widely publicized the findings, points to very low reading ability जो इंडिया में है. Numeracy भी हम बहुत
पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दीज टेस्ट आर फॉर स्कूल चिल्ड्रन। सो प्राइमरी लेवल की यहाँ पे बात हो रही है। सो डेफिनेटली अगर प्राइमरी लेवल पे हम ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे, ज्यादा ग्रोथ वहां नहीं दिखेगी, तो आगे भी चीजें खराब ही रहेंगी। तो ये फाउंडेशन होता है, तो अगर फाउंडेशन पे चीजें स्ट्रांग नहीं रहेंगी, फाउंडेशन ही वीक रहेगा, वहां पे ही फ्लॉज रहेंगे, तो आने वाले, चाहे आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हो, तो वहां पे भी फिर चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। सो एजुकेशन सेक्टर पे काम करने की हमें जरूरत है। उसके अलावा the economic reforms of 1991, they were undertaken with a view to raising the presence of manufacturing. So जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बात करी, 1991 का जो रिफॉर्म्स का मेन फोकस था वो यही था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमें एक्सपेंशन देखने को मिले. So to this effect, the trade and industrial policy regime had been overhauled. However, it overlooked the need for an entire ecosystem, including schooling पे नहीं फोकस किया, ट्रेनिंग पे नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं फोकस किया. So this has to be built. इस पे काम करने की जरूरत है. So तीन मेन चीजें इमर्ज हुई है जब हम बात करते हैं कि हमें किन एरियाज में और काम करने की जरूरत है when we talk about manufacturing. So one is schooling, training the workforce या human resource, and thirdly is the infrastructure sector. So this has to be built and it cannot be achieved merely through legislation. ये नहीं कि आपने लॉ बना दिया, पॉलिसीज रिलीज कर दी, स्कीम्स रिलीज कर दी. इम्प्लीमेंट करना भी उनको उतना ही इम्पोर्टेंट है, उनको मॉनिटर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है. So liberalizing the reforms have run their course in India. So this was all about the manufacturing sector. कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, क्या पहले हमने स्टेप्स लिए, बाकी कंट्रीज के भी हमने केस देखे, एंड और क्या करना चाहिए. So Central Asian foreign policy multi-vectorism pays off. So when we talk about the foreign policy of Central Asian economies, so between May 18 and 19, China it hosted what was called the C plus C5 summit. So ये एक new summit emerge होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है. मतलब I am going through it for the very first time, so you can note it down. C plus C5 summit in the city of Xi'an, which is first of its kind, which saw the participation of leaders of 5 Central Asian countries. So this is the summit of Central Asian economies. So which all countries participated was Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. So these are the member countries. And basically first C is China plus Central Asian की 5 countries. So these are named here. And 6 countries, then they jointly signed the Xi'an Declaration, issued a blueprint for the future development of China-Central Asia relations. So ये हम पहले भी बात कर चुके हैं indirectly कि China अपनी presence and engagement increase कर रहा है. It is trying to grow that in Central Asian economies also. So Belt and Road Initiative पे बात हुई, which was a new starting point, and people to people exchanges पे focus किया गया. Cultural Silk Road program, issues क्या हैं of regional terrorism and extremism. तो जब हम बात करते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, तो दे हैव बीन सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग मल्टी वेक्टर्ड फॉरेन पॉलिसी दैट स्ट्रेचेस बियॉन्ड द रशिया चाइना एक्सिस. सो दैट इज अ गुड थिंग एंड this shows the diversity, their capability, they are able to handle multiple countries at the same time, and they are not, it is not ki they are dependent only on Russia and China. ऐसा नहीं है. So in the context of post-Soviet states की बात करें, तो this policy it has been traditionally associated with their sovereignty vis-a-vis Russia, since it implies stronger economic and political ties with other centers of power. एंड अब हम जब बात करते हैं कि दे आर नॉट जस्ट मेयरली रिस्ट्रिक्टेड टू रशिया एंड चाइना, तो नोटेबली अक्टूबर में लास्ट ईयर में यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट ही आल्सो विजिटेड कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, sending a strong political signal of the EU's commitment to the region. So that's there. इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1991, सो उन्होंने न्यूट्रलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है as far as the foreign policy is concerned. Uzbekistan के केस में main priority of its foreign policy is regional security in Central Asia, which includes the precarious environment in Afghanistan.
So even that is one of the factor points. So economic or security concerns, they have been the decisive factor in formulating the foreign policy strategies of Kyrgyzstan in the post-independence era. So for them, economic and security concerns, that matters. So ये basically show कर रहा है कि they are not just, restricted to China and Russia. So lessons for broader post-Soviet space. So the brief overview of the foreign policy trajectories in Central Asia highlights their common characteristics, that is multi-vectorism. So this applies to all the Central Asian economies. ये नहीं कि there is only a handful of countries which follows this multi-vectorism. It is applicable to all the Central Asian economies. So this is a pragmatic approach which certainly pays off as it provides the benefits of maintaining the friendly ties with multiple players, and including Russia and China also. So with this kind of strategy, they've been able to maintain friendly ties with a number of countries, and European Union का भी role है, India का भी definitely we are increasing our role. So this is an important region for us. Russia, China हो गए, and definitely we know US is also involved. But now things are also reshaping, the things are getting reordered जब हम geopolitical dynamics की बात करते हैं. So lithium की हम बात करें, who should own the world's lithium? So firstly, specifically India के context में ये हमारे लिए बहुत important हो जाता है, because जम्मू एंड कश्मीर में रीसी डिस्ट्रिक्ट में, this picture is from रीसी district only, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में we would like discovered lithium reserves. So India में और कहाँ पे हमें lithium reserves मिलते हैं, कहाँ पे उनकी एप्लीकेशन है, कहाँ पे यूज किए जाते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसा वो लगता है, वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सो लिथियम इंडस्ट्री इन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. So status क्या है as far as India's lithium industry is concerned? So India की electric vehicle market, it was valued at $383 million in 2021, and it is expected to expand to $152 billion in 2030. तो India अभी import करता है around 450 million units of lithium batteries, and which is valued at rupees 6,600 crores, which makes the development of the country's domestic lithium reserves a matter of high stakes. मतलब अभी हम imports पे ज़्यादा dependent हैं, और अगर हमें domestically अपना बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए हमारे पास डोमेस्टिकली इनफ अमाउंट ऑफ लिथियम रिजर्व्स होने चाहिए. तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए अगर हमें अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करनी है. So scholars उन्होंने argue किया, they have argued कि ongoing global transition to the low carbon economies, जब हम green energy transition की बात करते हैं, तो rapid expansion of artificial intelligence, 5G networks, that will greatly reshape the global and regional geopolitics. So AI and 5G, two very important areas, and access to and control over जो rare minerals हैं, like lithium is one of them, cobalt is one of them, it will play a crucial role in this epochal changes. तो जिन कंट्री के पास ज्यादा रेयर मिनरल्स होंगे, डेफिनेटली वो इन एरियाज में ज्यादा पावरफुल भी होंगी, क्योंकि फिर बाकी कंट्रीज उनके ऊपर डिपेंडेंट होगी. So that's why lithium reserves की जो इंडिया में डिस्कवरी हुई in Jammu and Kashmir, that was very, very important. It's very crucial for us. So who should actually own these minerals? So July 2013 में there was a 3-judge bench of the Supreme Court of India who ruled कि owner of the land has the rights to everything beneath down to the center of the earth. मतलब जो जमीन का मालिक है, अब उस जमीन से जमीन के नीचे कुछ भी हो, ओनर वो इंसान ही रहेगा. एंड इतना भी बोला गया कि जो भी चीज डिस्कवर होगी टिल डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो ही इंसान वुड बी द एक्चुअल ओनर ऑफ दैट थिंग, वट एवर वुड बी द डिस्कवरी. सो येट द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड जो है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, obviously forest के कोई individual owners नहीं है, which make up more than 22% of India's land mass, like hills है, mountains है, and revenue wasteland, they are publicly owned. So obviously that is here the role of government comes into the picture. So Supreme Court, it also recalled कि जो union government could always
ban private actors from mining sensitive minerals. So government के पास इतनी power है कि आप private actors को ban कर सकते हो from mining in sensitive minerals. And इसमें like it is already the case with uranium under the Atomic Energy Act 1962. So in India's context, lithium is as important as if not more than uranium. मतलब uranium से अगर ज़्यादा important नहीं है lithium, but we can say कि uranium जितना important है. So that's there. And how do other countries, they are managing their lithium reserves? So stories of two South American countries, Chile and Bolivia, which have the largest known reserves of lithium, they are particularly instructive. So जो global distribution है वो पता होना important है. So South American, Latin American countries, Chile and Bolivia, वहाँ पे largest known reserves of lithium हमें मिले हैं. चिली में हम बात करें, ओके मतलब इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, how they are managing things. बस हमें पता होना चाहिए ग्लोबली किन किन कंट्रीज में मेजर कॉन्सेंट्रेशन है. सो व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करने की जरूरत है? अगर डिस्कवरी हो गई उसके बाद हमें क्या करने की जरूरत है? सो एज इंडिया इट एक्सप्लोर्स एंड डेवलप्स इट्स ओन लिथियम रिजर्व, सो इट्स नोटेबल कि जो एप्रोप्रिएट सेक्टर है, development है this sector, it will require very high level of effectiveness on the part of the Indian state. So much of India's minerals wealth, it is mined from regions with very high levels of poverty जहाँ पे देखी गई है, environmental degradation and lax regulation. So effective और careful management बहुत important है हमारे लिए in order to meet the development targets. And social well-being को मद्देनजर रखते हुए, that is also important, we can't violate that. Environmental safety is one of the things that needs to be kept in mind, and national energy security. So ये सारे keywords हैं, which is very important. सो इंडिया एंड नेपाल ने पैक्ट साइन किया ऑन एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी. सो India is going to import 10,000 megawatt of electricity from Nepal, which highlights the close cultural link between the two countries. And Prime Minister calls for fast tracking projects related to the Ramayan circuit. So Ramayan circuit के बारे में आप और search करोगे, and then जो different hydroelectric projects हैं, like there is Lower Arun hydroelectric project between SJVN, which is in India, and Investment Board of Nepal, तो उस पे बात की गई है. And then Fukut Karnali hydroelectric project, एक ये project है, which is in Nepal, so that is important. So again UNSC reforms की बात की गई है at the BRICS meeting. So आपको पता होना चाहिए like UN reforms में UNSC reforms is one area. So India and China again they hold talks on LAC issue in New Delhi. So अभी कोई ऐसा major development हमें नहीं देखने को मिला, but talks they are going on, the disengagement talks that we talk about. So according to law commission, sedition law, it can be retained, but with safeguards. Like we have fundamental rights, but there are some reasonable restrictions. So even similarly here, sedition law की बात की जा रही है कि law को retain कर सकते हैं when we have proper safeguards at place. So it said that sedition being a colonial legacy, it is not a valid ground for law repeal, but in view of the misuse of Section 124A, the panel has recommended the center to issue model guidelines to curb its strong application by the enforcement agencies. So no doubt it is a part of the colonial legacy, but हम इसको completely repeal भी नहीं कर सकते हैं. तो जो misuse है उसको रोकने के लिए सेंटर को guidelines issue करना important है, ताकि आने वाले time में इसको misuse ना किया जाए. So merely ascribing the term colonial to a law or institution does not by itself ascribe to it an idea of anachronism. So that's what the Law Commission has to say. So half of electricity to be from renewable sources by 2027.
So while India may have internationally committed to half its installed electricity being sourced from renewable sources by 2030, ये एक target है, but estimate of the country's projected power needs by the Central Electricity Authority suggest कि this target may be achieved early by 2026 या 27 तक हम ये target achieve कर लेंगे. So government is committed to adding 50 gigawatts of renewable energy every year. Coming to the world page, so Russia court finds WhatsApp for failing to remove the banned content. Russia says it has repelled the new Belgorod border incursion attempt. Then Australian soldier loses Afghan war delegation. US slaps sanctions on Sudan rival factions as ceasefire crumbles. So US and Taiwan, they inked the trade deal as China issues wording. So again, tensions would grow in this region. Taiwan Strait, जो और बाकी important geographical areas हैं, water bodies हैं, and important islands जो located around Taiwan, वो हमारे लिए important हो जाते हैं. In South Africa, mulls the legal options on ICC warrant against Putin. So the Russian president has been invited for the BRICS summit in August. As a member of ICC, South Africa is under pressure to arrest Putin, and that is the thing. So Pakistan mein, we know about the economic and the political situation. So Pakistan mein record inflation देखी गई है for the second consecutive month. So at 36.5% in April, Pakistan की जो CPI record की गई. So this is the highest ever recorded in the country as well as in South Asia. बिजनेस पेज पे मई में जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था इट स्केल्स अ 31 मंथ हाई, बट हमने अभी पहला आर्टिकल ही देखा था जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आज डिटेल में बात करी है, तो ये तो मंथली बेसिस पे हो गया, बट इट इज अ पॉजिटिव थिंग कि 31 मंथ हाई पे हमने रिकॉर्ड किया है, बट हमने जो ईयरली ग्रोथ देखी वो बहुत ही लो है, तो वो हमने ब्रॉडली सारी चीजें एनालाइज कर ली हैं. So RBI should adopt neutral policy stance as inflation is cooling. So this is one of the views in the markets. Let's see actually RBI क्या करता है. So digital leadership roles, they are also rising in India. So digitally we are seeing expansion and different areas maybe we are seeing the growth. Coming to the mid newspapers, so be afraid why technology pioneers, they are in a bind about artificial intelligence. So isse regarding concerns with time they have been increasing, and now one group says कि हमें इसको like इतना इस पे dependent नहीं होना चाहिए, and this can play a role of a disruptor also. So उनका कहना ये है, मतलब experts का कहना ये है कि artificial intelligence का जो use है it needs to be heavily controlled. So let's understand it in detail. So who exactly it is worried about artificial intelligence? So one of the historians and writers, Harari, has been consistent in criticism of artificial intelligence and says he's not sure कि humans they can survive AI or not. So ethical concerns भी एक area है जो हमारे लिए problem create कर सकता है. उसके अलावा experts का क्या कहना है? So Center for Humane Technology authors they underscore कि जो strength है of generative AI is that it can treat everything as a language, even the DNA that makes us unique. So उसको भी it can treat it like a language. So इसका मतलब ये हुआ that an advancement in any one part of the AI world, it can have an impact in every part of the AI world, creating a network effect. So there is no ignoring the fact that the generative AI treadmill है, it is moving at a furious pace. The ChatGPT की हम बात कर ले, alone it has more than 100 million users. Further, AI it is now able to create codes also अपने आप से completely on its independent. So these are some of the concerns, and experts, कुछ experts ऐसे भी हैं जो disagree करते हैं with the concerns. So they are saying कि AI risks and harms, they can be minimized also with careful engineering and regulation. We can regulate its usage. And
AI, it also supports the line of thinking as well. So he responded with a cryptic tweak in silent majority of AI. So there was one area, can generative AI reason and think? क्या वो like reason and सोच सकते हैं? So generative AI, it refers to such types of AI models like Chat GPT की बात करें, DAL-E and Mid-Journey, Bing Chat. So these are different forms of AI. They can create text and images, videos और code. ये सब वो create कर सकते हैं. But they are like too complex for us to fully understand also. These are language models. इसके अलावा so it says here confidently we can confidently assert कि जो chat GPT है it is not conscious मतलब वो सोच नहीं सकते हैं. These are systems which are trained, उनको training की जाती है, training दी जाती है to give the outward appearance of human intelligence. क्या use किया जा रहा है? Outward appearance of human intelligence, but they are not so in reality. So not all will agree with this assessment, but yeah, that is the reality. So regulation की बात करें तो governments they want AI to address जो data privacy है, security, algorithmic transparency, bias है, diversity and accountability, ये सारी चीजें address करना important है. So Canada की बात करें तो they have issued rules which include standardizing AI design and the development of the private companies across provinces. USA की बात करें तो AI Bill of Rights, it calls for greater data privacy, which is not binding. And European Union की बात करें तो they have categorized AI as unacceptable risk and minimal risk. And India में Digital India Act है, when notified, it would be expected to regulate AI as well and intermediaries that are high risk AI, but there is no separate regulation for AI so far as India is concerned. So this is an important topic for us. Coming to Indian Express newspaper, so we'll like ये सारी चीजें हम already बात कर चुके हैं. इंडिया नेपाल में जो बाउंड्री इश्यूज हैं वो हमें पता होना important है. जो locations है different areas की, that is important for us. So you can find that and spot those areas on the map. So Yellow River China में flow करती है और जो बाकी global rivers हैं that becomes important. So it is specifically talking about China. So we'll directly move on to the editorial page. Big picture is bright. So यहाँ economy की बात की जा रही है. GDP data surprises only the pessimists, which were like thinking negative and expecting a slowdown in the growth. So growth this year, it is likely to overshoot the RBI's estimate. So वो तो आने वाले time में पता चलेगा. Broad picture की बात करें तो that emerges from the data is that overall strength जो है Indian economy की, it remains intact. So that is very, very good. And rebalancing of demand from the private consumption to investments will spur the growth once consumption that also picks up. ये हमने कल बात करी थी कि consumption activities, consumption demand और increase होने लग जाएगी, उसमें हमें एक pace दिखने लग जाएगा, तो वो हमें बहुत help करने वाला है क्योंकि Indian economy जो है that is consumption based economy. So private investment activity, it looks robust and the domestic monetary conditions there, they are also supportive of the growth. So this makes us believe कि जो growth है, it is likely to overshoot RBI's estimate of 6.5%. And as per the estimate, economy is likely to grow at around 6.7%. So security is no longer regional. What happens in Asia matters for Europe. मतलब security की अगर हम बात करते हैं regional security की, तो वो सिर्फ उस area से restricted नहीं है. जो globally like for Europe जो Asia में हो रहा है, definitely वो उनके लिए भी cause of concern है, वो उनको भी matter करता है. तो आज के टाइम में that's how things they have expanded and that's how we can say they are linked to each other. Even the regional security thing.
So here we have an interview of the Secretary General of NATO. So his views are mentioned. You can just go through them once. Coming to the explain section. So for the cool summer so far, thank the frequent spells of rain. Yes, that's true कि जो इस साल की गर्मी पड़ी है वो इतनी ज्यादा नहीं पड़ी जितनी होती है नॉर्मली. सो यहाँ पे वर हैविंग दिस अनसीजनल रेनफॉल्स जिसकी वजह से द टेम्परेचर वाज रियली नाइस, वेदर वाज गुड. So western disturbances का role रहा. Most of the rainfall activity in the last 3 months happened over north and northwest India and central India, and that was caused by western disturbances. So these are east moving rain bearing wind systems that originate beyond Afghanistan and Iran में इनका origin है. They pick up the moisture from as far as Mediterranean Sea and even the Atlantic Ocean, and then they cause rain. So these are examples of extratropical cyclones that are a result of low pressure areas formed due to interactions between polar and the tropical winds. So यहाँ पे जो भी terms mention की गई है इसकी concept clarity होना बहुत important है. Extra tropical cyclones क्या होते हैं? यहाँ पे conditions already mentioned है कि what are the conditions which lead to the formation of extra tropical cyclones. इसके अलावा western disturbances के बारे में भी detail mention है. Western disturbances they frequently influence the weather over India, particularly जो northwestern regions हैं. And there were 7 western disturbance events in March, 5 in April, 8 in May, which led to the frequent and sometimes even heavy rainfall. So no pointer to the monsoon. So current जो weather conditions है, they are the result of short-term local interactions. So this is not monsoon which is going on जो rains हो रही है. So they have no bearing, that do not have a bearing over the long-term जो weather है. These are short-term interactions. So how the monsoon turns out remains to be seen. So इसका monsoon के ऊपर कोई impact नहीं होता है. So that's there. And जो एलिनो प्रिडिक्शन है वो एक अलग चीज है. मॉनसून से रिलेटेड इंडियन ओशन डायपोल के बारे में पता होना चाहिए. एलिनो लानीना ये बेसिक चीजें हैं. So Deccan Queen क्या है? 93rd birthday of the iconic Pune Mumbai shuttle. India's first superfast train was celebrated on Thursday. So this is not so important. इसके अलावा ब्रिक्स की बात करें that could be bigger. So grouping of ब्रिक्स की बात की जा रही है कि अगर और कंट्रीज ज्वाइन करती है ऑब्वियसली नेम तो चेंज हो ही जाएगा. तो बाकी सारी जो एरियाज हैं वो हम समझते हैं. ग्रुपिंग ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इज कंसिडरिंग वेदर और बाकी कंट्रीज को भी ऐड किया जाना चाहिए एज मेंबर्स और नॉट, एंड टू लुक सीरियसली एट कॉमन करेंसी. सो ब्रिक्स करेंसी की एक बात की जा रही है, बट जो प्रपोजल्स हैं दे इन्वॉल्व मेकिंग कॉम्प्लेक्स चॉइसेस आल्सो. सो ब्रिक्स इज लुकिंग फॉर मल्टीपोलैरिटी. बाकी कंट्रीज को कौन सी ऐसी कंट्रीज रहेंगी जिनको आप मेंबर बनाना चाहोगे? तो अमंग द कंट्रीज दैट हैव बीन मेंशन्ड फ्रीक्वेंटली सिंस लास्ट ईयर, जिनको ब्रिक्स is considering to consider them or to make them as a members of BRICS includes Argentina, Nicaragua, Mexico, Uruguay, Venezuela from Latin America, Nigeria, Algeria, Egypt, Senegal. These are from Africa, then Saudi Arabia, UAE, Turkey, Syria from West Asia, Kazakhstan from Central Asia, Bangladesh, Afghanistan, मतलब बहुत सारी countries हैं in short. But अभी it is like not clear which countries they might be added. And इसके अलावा BRICS could lay claim to representing more than half of the world's population अगर ऐसा होता है. So what will happen if China in the BRICS? Basically China मतलब already member है BRICS का, but China in BRICS, how things are changing because of that. Let's understand that. So China would be the future economic powerhouse of the world, with South Africa being added later. So idea of BRICS था जो idea of BRICS है, it came between 2001 and 2003 from the Goldman Sachs chief economist Jim O'Neill, who projected कि जो 4 emerging markets है Brazil, Russia, India and China, they would be the future economic powerhouses of the world, and South Africa being added later. So economic performance of BRIC की हम बात करें तो वो mixed रहा है, war in Ukraine रहा है, which has brought the West together on the one hand and strengthened China-Russia partnership. This we have already had a look already, and this is turned into an aspiring bloc
that appears to be challenging the Western geopolitical view. So that's how it is being taken up. And China is driving the expansion of the group. Definitely, China is at the hegemony. After a meeting of BRICS official, China's foreign office said that membership expansion it has become part of the core agenda of BRICS. So significantly, China does not use the word multipolarity. Instead, it is using multilateralism whenever it hits out at US hegemony. So theme of BRICS 2023 is BRICS and Africa Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Inclusive Multilateralism. So India in BRICS की बात करें तो if India's presence at the G7 summit in Hiroshima, where Prime Minister also participated in an informal Quad summit, it was seen as a sign of New Delhi's US tilt. The importance it attaches to the anti-West BRICS is an apparent contradiction, much like the several others it has negotiated through the last year. So that's their common currency की बात की जा रही है. So idea for common currency was proposed by Russia's president, and the idea got a cautious reception with the leaders deciding to set up a committee so that जो common currency की बात की जा रही है पहले उसकी viability को समझना important है, इसको assess करना important है. So that's there. So India के अगर हम stand की बात करें regarding common currency, so individual countries, they have their own position on this matter. This is what India had to say. So basically, China is targeting the hegemony of the US dollar as a source of all instability in the world. This is what China feels and is already trying to push the yuan as a trading currency in Central Asia. But there is no evidence that it is ready to dump the dollar yet or not. So इस पे भी clarity नहीं है. So GDP growth estimated to cross 7%. What is in store for the markets? So markets की बात करें, capital markets की बात करें, Sensex, which usually follows the Wall Street, मतलब US की जो market है हम उसको follow करते हैं. Indian markets, they are up by only 2.6% so far in the calendar year 2023. Seasonally adjusted S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index जो है it rose to 31 months high. So GST collections की बात करें, FPI inflows, PMI data, credit growth, strong quarter for GDP numbers, they are suggesting resilient Indian economy. Global factors जो हमारे लिए concern के हैं, which are a cause of concern for India. Firstly, US debt ceiling. तो ये globally सारी countries के लिए बहुत ज़्यादा concern है. China की जो factory activity है, वहां पे भी इतना ज्यादा ग्रोथ या रिकवरी नहीं देखने को मिल रहा है. मतलब there is decline in the Chinese factory activity that could lead to apprehensions among the investors regarding overall health of the global economy. So that is one factor. इसके अलावा FPIs, are they back in India or not? Because अभी तक जो rupee was depreciating majorly was because of जो FPIs say they were exiting the Indian market. So once FPIs, they will start showing more confidence in the Indian economy, they'll start investing more. तो एक वो हमारे लिए positive indicator हो जाएगा. So that's there, all about the economy. So GST collections की हम बात कर चुके हैं. उसके अलावा इंडिया के जो रशिया से ऑयल परचेजेस हैं, they are at fresh high in May. So अभी तक we were seeing की growth जो थी या जो amount हम import कर रहे थे बहुत low था. I mean to say कि जो trend था, we were moving towards a downside trend, but again जो अब figures आई हैं May की, we have made new records. So 42% जो share है इंडिया का crude oil import पाए, वो रशिया से आ रहा है. So it was like इससे पहले Russia-Ukraine war से पहले it was merely 1%, and now you can imagine it is at 42%. तो कितनी massive growth हुई है. So liquidity is improving, inflation is falling, deposit rates, they stay steady. So all positive indicators. So deposits of the scheduled commercial banks rose after the note ban in 2016. Obviously, वो तो increase होना ही था. Economy likely to grow in this range in this current financial year as per CII. Key reforms, they have transformed India in the last 10 years, says Morgan Stanley report. तो बहुत मतलब
ये बहुत पॉजिटिव पिक्चर निकल रही है इंडिया की। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस की यहाँ बात की जा रही है। नेशनल हाईवेज में हमने ग्रोथ देखी है, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस में, रेन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी में, रेलवे रूट इलेक्ट्रिफाइड। तो ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हो गए। तो सप्लाई साइड जो पॉलिसी रिफॉर्म्स रहे हैं इंडिया में, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पे हमने काम किया है, सोशल ट्रांसफर्स पे काम किया है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लेके आए हम 2016 में, गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, दे आर अमंग द 10 की रिफॉर्म्स which have transformed India in the last decade as per Morgan Stanley report. All right, so this is like, it's very good. Iske alawa, that's all for today. So these were all the important topics. Very like nice articles were there today. And thank you so much for joining us, and do subscribe to the channel and hit the like button for this video.